Good morning, everyone. Thanks all for joining the session this beautiful Sunday. Uh, and we'll start this session with today's topic about rich dad and poor dad, where we are going to talk about how money matters and how we think that going to lead us to be being rich or poor. So yeah, hand over to Priya ji. Thank you. Thank you so much, Uttam ji. So, good morning, all of you. And my name is Priya, and I'm from Nagpur. I was pursuing chartered accountancy, but after clearing my foundation examination, I completely dropped that field and I'm into entrepreneurship, working on an e-commerce business platform. So, before or during this journey of entrepreneurship, I learned so many things, and I started my journey by reading the books. So, when I started, जब मैंने start किया books को पढ़ना, I realized that these books can really change your perspective, your old beliefs, and your old expressions of taking the things because of your past experiences. So I have just made a small PPT on that. So if you all allow, and who all are listening, if your video and audio is mute, still who all are listening can hand raise or do something like that. Okay, Ashwini ji. Okay, no problem. Let's start. Jaya ji is also there. ठीक है. I'm not a professional speaker like that, but yes, I'll try. Okay. First of all, I've picked out some post which explains, yes, it is true that our education system, curriculum of the Indian education system is theoretical and based on passing exams. Therefore, students do not look beyond their textbooks. Today, the students are not aware of what is happening in the world. ये बात बहुत सही है, बिकॉज ये बात मैं खुद से कोरिलेट कर सकती हूँ कि जब मुझे किसी ने बोला था कि ऐसा भी कुछ होता है अदर देन सीए, आई कंप्लीटली डिनाइड. वाई? बिकॉज ऑफ माई नैरो माइंडसेट बोल दो, या फिर बिकॉज मैंने कभी देखा ही नहीं एकेडमिक्स के बाहर, मैंने कुछ देखा ही नहीं, ना ही मैंने एग्री किया देखने के लिए, बिकॉज माई अपब्रिंगिंग वॉज इन दैट वे. इन एवरी सोसाइटी मेंबर्स या फिर एवरी वन इन द फैमिली इज डूइंग द सेम. सो आई थॉट कि नो, बस इतना ही होता है, इसके अलावा नथिंग इज देयर. सो वी हैव टू लुक बियॉन्ड, बिकॉज वो जमाना गया जहाँ पे हम जहाँ पे बोला जाता था कि 1 person इज अर्निंग एंड 10 people are feeding, like they are surviving their lives. But now this is not the case anymore. So what is important? Your Indian education system, the skills which are important, soft skills are communication skills that are very important for everyone in life to convey their thoughts and messages to a large audience, and also at the industry level to achieve success. For example, interview skills, effective communication, marketing skills, public speaking, effective listening. ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज ये मैंने पर्सनली फील किया, ये सारे पॉइंट्स मैंने पर्सनली फील किए, तभी जाके मैंने पीपीटी में पुट किए. बिकॉज हमने एक डिस्कशन हुआ था सीए ग्रुप, जो मैं उनके साथ भी कनेक्टेड हूँ. तो आफ्टर परसुइंग सीए होने के बाद भी वी डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ. सो यहाँ से हम एक अंदाजा या पता लगा सकते हैं कि वी आर लैकिंग इन दैट. No doubt we have a theoretical knowledge, we have a degree, but we do not know how to express our feelings. And this is the cause of depression, anxiety, stress. This is the cause. So, yes, I founded the solution that by reading books, it can be overcome to some extent. Not completely, but yes, to some extent. You can open up yourself. When you will open up, when you have the knowledge, when you have right knowledge. So the lessons which I learned from this book is, first is learn to listen, pay yourself first. And these points are very simple to understand. So if you want me to go in deep, you can please ask. Buy luxuries last, not first, because we think like मुझे भी यही लगता था कि घर इज एन असेस्ट, क्योंकि हमेशा सुनते हो, यही देखा है कि नहीं, अपना घर होना चाहिए, चाहे एक कमरे का ही क्यों ना हो, अपना घर होना चाहिए. पता नहीं कि डायलॉग तो इतने बार इतने लोगों से सुन चुका था कि यही लगता था कि बस घर तो होना ही चाहिए, घर है इंसान के पास तो सब कुछ है. बट इट इज नॉट द केस. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट house is a asset or a liability. If it is giving you money, then it is an asset, but if it is taking out money from your pocket, it is not an asset, it is a liability.
एंड मेरे एक नोन टू है जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक बिजनेस सेटअप है उनका जयपुर में. सो उनसे जब मेरा डिस्कशन हुआ तो ही इज ओनर ऑफ 500 करोड़ कंपनी, मसाला कंपनी, बट स्टिल ही डोंट हैव दैट लग्जरियस हाउस. मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने बोला कि मैंने कभी इस चीज पे फोकस ही नहीं किया. दे आर लिविंग इन अ 3 बेडरूम हॉल किचन कंपार्टमेंट. बट उन्होंने बोला कि आई वांट टू क्रिएट एन असेट, एंड एक टाइम बाद में आफ्टर क्रिएटिंग दिस आफ्टर 10 to 15 years वो उनका प्लान है कि वो सीआरस में बिल्ड करेंगे. तो दैट इज एन असेट. सो ये छोटा सा एग्जाम्पल था कहीं ना कहीं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए. रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज, aim for more valuable assets, be in control over your emotions, because emotionally we do so many things which like हमें पता है that this is not right, but due to the influence of other people we tend to do it. Be in control, work to learn, don't work to earn. We हमें नहीं पसंद होता कुछ काम करना, still we do it. Why? We have to earn. And we like completely forget the motive that अगर कोई चीज हम कर रहे हैं तो we have to learn from it. I am not expert in taking the presentation, but why I took the chance and take the opportunity, yes, I have to learn from it. यही एक प्लेटफॉर्म्स होता है जो, बट ये चीज हमारे जो आज का यूथ है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है. इफ यू आस्क देम दे विल जस्ट completely deny this. So we have to, like, as a individual, as a mature individual, we have to take this as a serious note. You become what you study, read a lot, you become what you study. मैंने एक WEF का भी जस्ट आया था आर्टिकल, उसमें मैंने रीड किया कि 85% of the leaders are readers, and it is completely true. They read in a week they read one book, in a year they read 50 books. So it is true for everyone. Reinvest, you become what you study. Reinvest excess cash generated by assets. Surround yourself with people smarter than you. It is true. We think कि हम लोग यहाँ पे 4-5 ग्रुप में स्मार्ट है तो हम ही बात करेंगे. नो, जहाँ पे एक्स्ट्रा, जहाँ फिर ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, अगर उनसे सराउंड करेंगे तो वी विल अपग्रेड. बिकॉज आप सबने भी एक कहावत सुनी होगी, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर. सो ये कॉन्सेप्ट बहुत सही है, बट थोड़ा सा हमारा ओल्ड बिलीफ अलाउ नहीं करता कि हम ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ रहे. एंड वी ऑल्सो डोंट एक्सेप्ट. हम लोग बोलते हैं अरे ये ज्यादा ज्यादा का है, ये ज्यादा होशियारी मारता है, ये ज्यादा का है, यार इसके साथ क्या रहना है. नो, वी हैव टू एक्सेप्ट. ठीक है. एंड यस, दिस बुक ऑथर जो है इस बुक के, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी, इनके जर्नी से, लाइफ की जर्नी से बहुत कुछ सीखने मिलता है. बिकॉज इन्होंने भी अपनी लाइफ एज अ इंडिविजुअल जीरो से ही स्टार्ट की. ही टुक हिज एकेडमिक एजुकेशन लाइक वी ऑल डू, 8, 10, 12. प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक डिग्री कोर्सेज, MBA, BCom, डॉक्टर, लॉयर, CA, इंजीनियर, एनी कोर्सेज. देन उन्होंने जॉब किया एज अ फाइटर पायलट. एंड जब जॉब कर रहे थे ही रियलाइज वन थिंग, दैट he's working for someone else. Like if he sells 5 items, income is same. If he sells 50 items, income is same. Then he decided to do a business. उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, सल्फर नॉलेज का. बिजनेस वाज गोइंग अमेजिंग, ट्रेमेंडस. सो जब बिजनेस हमारा अच्छा चलता है तो व्हाट वी डू, वी टुक अ लोन एंड उसको एक्सपांड करता है. एंड उसके साथ साथ एक चीज और करता है जो गलती करता है, स्टेबिलिटी आने से पहले हम अपने एक्सपेंसेस इंक्रीज कर देते हैं. लाइक परचेजिंग अ कार, परचेजिंग अ हाउस, उन्होंने भी किया. बट अचानक से, बट एक चीज बोली जाती है, समय किसी का भी तयशुदा नहीं होता. तो दिस इज अ लाइन विच हिट मी. यस, किसी का भी फिक्स नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता. सो अचानक से वहां पे जहाँ रहते थे वहां की गवर्नमेंट चेंज हुई, एंड एट द एज ऑफ 27 ही वॉज फाइनेंशियली ब्रोक. So at that time, he realized he did everything in his life, academic, professional, job, business, but still he is zero right now. So इस बुक से ये चीज समझ में आया कि उन्होंने कुछ ऐसे वर्क किए कि एट द एज ऑफ 47 ही वॉज फाइनेंशियली फ्री. सो जो कौन पर्सन हमें गाइडेंस कर सकता है, हु इज ऑन दैट पाथ. सो आई फॉलो दिस पर्सन, इवन इन माई बिजनेस वी फॉलो दिस पर्सन वेरी मच. The main thing which I learned from this book is this type of education, which I was, and I think we all are unaware that there are 3 types of education system. First is academic, 8, 10, 12. Yes, completely agree. This is very important for each and every individual. Second is professional education. That is, I told you earlier that MBBS, MBA, LLB, BTech. But yes, there is a 3 type of education. That is, third one is financial education.
हम किसी को भी मतलब बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में ना किसी स्कूल ने बताया, ना कोई कॉलेज, ना कोई इंस्टीट्यूशन, बट ये एजुकेशन हमें लाइफ को कैसे जीना है इसमें हेल्प करती है। ये होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड यस, गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड दिस, सो दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये जो एजुकेशन जब हमारे पास में रहेगी तो हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन उस नॉलेज से ले पाएंगे। अभी हम किसी के दूसरे के बिलीफ से लेते हैं कि हाँ इसने ऐसा किया, या हमने आज तक के जो देखा। सो दिस एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली रिच डैड पुअर डैड में जो टॉपिक कवर है या फिर जो सारे पॉइंट्स जो समझाने की एक्सप्लेन किया है, वो इस एजुकेशन से रिलेटेड है। कि दो डैड थे, एक खुद के फादर थे, उनके बायोलॉजिकल फादर, एंड वन इज फ्रेंड फादर। बट फ्रेंड फादर इज 8th स्टैंडर्ड pass, and he was the richest person in that Hawaii state where they live. But poor dad was a double PhD holder, but still he was poor. बिकॉज हमारे यहाँ पे एक मिथ है कि एजुकेशन का मनी से कोरिलेशन बन, बट इट इज नॉट। मनी एंड एजुकेशन इज नॉट कोरिलेटेड, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग दैट एजुकेशन इज नॉट important, it is very important, but along with it practical education is also important, because हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा बढ़ रहा है, एंड यूथ आज कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है अपनी लाइफ को लेके। दे आर डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, and reading the books is one of the best solution I think. रॉबर्ट कियोसाकी ने और भी 27+ बुक्स लिखी है, बट वो सारी बुक्स वेल्थ से रिलेटेड है। मनी एंड वेल्थ आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मनी की वैल्यू कम होती है एज टाइम गोस, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, बट वेल्थ की वैल्यू इंक्रीज होती है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जब मुझे पता चले तो आई वॉज रियली शॉक कि मुझे कुछ भी नहीं पता था ये सब। दो आई वॉज परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अ वेरी रिस्पेक्टेड and renowned profession, but I was unaware of this type of concept. And Robert Kiyosaki is a partner of Donald Trump, ex-president of USA. So this was a short PPT to convey that reading the books is very important, and we have to change our mindset. We cannot wait for the systems for the government, for the school systems to be changed. We have to change ourselves so that we can when family is with you, like हम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ बैठ के कुछ लर्निंग्स ले रहे हैं, बट जब हमारी फैमिली भी हमारे साथ हो जाएगी तो इट विल बिकम अ फोर्स, एंड वी कैन हेल्प सो मेनी अदर पीपल. सो यस, थैंक यू उत्तम जी, दिस वाज इट. Thank you so much, Priyaji. I think it's really a wonderful talk. I think I will let unmute the speaker, all the participants, so they can also ask questions, right? Before that, I had just one question regarding that, right? I think you covered a lot of point where you say basically how we can get. I think we saw Robert Kiyosaki, right? He was financially broke at 27, and he then achieved at 47 the financial independent freedom, right? So Yeah. if we can take something like 2 3 skills from them, and right, which we can do every day in our everyday life, right? What I believe, right, definitely whatever we learn, right, until we implement, it's not going to benefit us, right? So what 2 3 things we can take away, and basically we can do every day that us lead to that financial freedom, right? What do you suggest? I will say here, first thing is say yes to every opportunity. Why? First of all is you have to try. Try. You will fail. You will not succeed in everything you take up. It is true. But you have to take. Because first thing is we tend to say no. Like any opportunity, just say yes. मैंने ये बात तो बहुत सारे एक्टर्स है, फिल्म एक्टर्स, आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने भी ये चीज बोला है कि कुछ भी लाइफ में आता है जस्ट एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू डू इट. मैंने कभी ऐसे पहले सेशन नहीं लिया है इतने सारे लोगों का, बट आई सेड यस, आई वर्क फॉर इट, एंड यस इट वेंट वेल. मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज से यस टू थिंग्स. एंड सेकेंड, उन्होंने वही बोला कि आप किन लोगों के एसोसिएशन में रह रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेफिनेटली आज आप जहां पर भी हो, जिस स्टेज पे भी हो, बिकॉज ऑफ योर एसोसिएशन आप देखोगे कि आपके आसपास में वही लोग आपको मिलने वाले हैं. एंड थर्ड इज यू हैव टू जस्ट लुक इनटू डिफरेंट आइडियाज. मैंने एक चीज यहाँ पे पहले किया था मेंशन, बट हटा दिया, कि व्हाई वी मिडिल क्लास कैन नॉट शिफ्ट टू अ रिच क्लास. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हम लोग वही चीज कंटिन्यू करते आ रहे हैं. वी वांट आवर रिजल्ट्स टू बी चेंज, बट वी आर नॉट रेडी टू चेंज आवर ट्रैक्स.
एंड अनलेस एंड until we will not change our tracks, how results can be changed? हमें वो लगता है कि हमारे ग्रैंडफादर ने वो किया, दैट इज ट्रांसफर टू फादर, फिर वो ही अपने बेटे को सिखाते हैं एंड वही कंटिन्यू चला आ रहा है. बट चेंज करना पड़ेगा. Technology is changing in a so fast, so we have to change. So be ready for change, be adaptive to change. So yeah, these are the three things, like, which I feel is the most important. Thank you. Thank you, Priya. Um, just raise your hand, whoever wants to ask question. I know a lot of people have questions, right? I think anything, whatever you feel like, right? Or I think in daily life, what do you think where regarding the finance, you think something which can be you want to ask how you struggle with that or something, anything, right? You can ask, right? They are not asking, it means they have understood everything. Yes, Purnima ji, anything you want to ask? फाइनेंस के बारे में आपने बताया एंड आपने कैसे अपने लाइफ में अडॉप्ट किया. प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, हाउ इट्स चेंज्ड योर लाइफ. Yeah, exactly. Because we all read the book, but we don't know how to adopt that in our life, no? So Yeah, we need to know that. And how true. can we shift a little bit every day? Yeah. How Yeah. we can change? या श्योर. यस, इट इज वेरी ट्रू. मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने भी एकदम से कर लिया, मैं भी ऐसी ही थी. मैंने पहले भी बताया कि जब मैं फाउंडेशन कर रही थी, मैंने, मतलब, आई वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग बियॉन्ड माय स्टडीज. दिस फोर वॉल्स मी. मुझे किसी से ना बात करने से मतलब, ना मुझे किसी रिलेटिव से मतलब. कोई आता है जाता है, हाँ ठीक है, आया गया, मुझे किसी से मतलब ही नहीं था. बिकॉज कहीं ना कहीं इतना सेल्फ ओरिएंटेड या सेल्फिश भी बोल सकते हैं कि आज अगर हम जॉब भी करते हैं तो वी आर डूइंग फॉर आवरसेल्व्स ना. व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, वी आर जस्ट डूइंग फॉर आवरसेल्व्स. सो ये चेंज कहाँ से आया कि मैंने जब मेरे बिजनेस कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ में वन मोर थिंग, रीडिंग द बुक्स. मैंने बुक्स रीड करने की हैबिट इनकलकेट की, जो मेरे अंदर में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं किसी को करते हुए, या कोई इसके बारे में बता रहा है तो मैंने बोला ठीक है. और अगर कोई देख भी जाता था फ्लाइट में बोलो या एसी कंपार्टमेंट में, तो आई यूज टू से, अरे ये लोग पागल है क्या, ट्रैवलिंग में कौन बुक पढ़ता है. ये वाला पर्सपेक्टिव था. एंड आज है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरे पास बुक्स अवेलेबल होती है, क्योंकि आज इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई. मैंने बोला ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वहां पे रिपोर्ट है, वहां पे बोला गया कि 85% जो भी आज सक्सेसफुल है, दे ऑल आर रीडर्स. वो हफ्ते में एक बुक कंप्लीट करते हैं. तो बुक से क्या मिलता है? बुक से एक्सपीरियंस मिलता है. 30-40 ईयर्स जो पर्सन ने लाइफ में गलतियां की है, या आज वो जिस स्टेज पे पहुंचा है, तो वो कैसे कैसे पहुंचा है, उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमें मिलता है. आई विल नॉट सपोर्ट मोटिवेशन. मोटिवेशन एक बार का होता है, जो हम एक बार लेके, हाँ जस्ट ठीक है. बट बुक्स है जो हमें हेल्प करती है. एंड यस, सिर्फ रीडिंग द बुक्स विल नॉट हेल्प. हमें कुछ कुछ चीजें, डिसीजन, जैसे अब एक कमिटमेंट बनाना पड़ेगा कि पढ़ना है, मतलब पढ़ना है. बिकॉज मैंने कई लोगों को देखा है, हाँ स्टार्ट किया बट टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता. रियली मुझे लगता है, मैं बोल तो नहीं पाती हूँ, कई को बोल देती हूँ जिससे रिलेशन होता है, बट सबको नहीं. 2 पेजेस पढ़ने का टाइम नहीं होता है. रीड एनीथिंग, जस्ट पिक अप द बुक एंड रीड एनीथिंग, बट एक खुद से कमिटमेंट होना चाहिए, तब तो वो बुक पढ़ के मतलब है. क्योंकि जब तक के वो कंसिस्टेंट हैबिट में नहीं आएगा, तब तक के कुछ भी उससे नहीं गेन किया जा सकता. क्योंकि आज तक के हमने जो एजुकेशन ली है, 10-12 साल, 15 साल, और एकदम से आपको कोई बोल रहा है कि आप इस चीजें पे शिफ्ट कीजिए, इट इज नॉट इजी. हमारी हैबिट वो है पढ़ने की, हम वो पढ़ लेंगे, बट ये पढ़ने की हैबिट नहीं है. तो सबसे पहले तो कुछ कुछ चीजें, जैसे कि आप एक कमिटमेंट बनाइए, नहीं मुझे 5 पेज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है. मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, उठना है. एक शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हो पहले से. तब होगा कि वो आप रियल लाइफ में, एंड उसको टिक कर सकते हैं कि हाँ आज ये चीज मैंने की, तो यस टिक. सो वो एक कॉन्फिडेंस भी देता है कि हाँ मैंने किया. सो यस, ये मेरा कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस था इस चीज को लेके कि ऐसे कर सकते हैं. आई थिंक शी हैज अ नेटवर्क इशू. Okay. Thank you, Priya ji. थैंक यू. Yeah. Any other question? Just, yeah, go ahead. You can ask.
ask, I think meanwhile, I'll cover, I mean, say, I definitely, uh, I read a lot about financial education, right? When I was in like 10, I used to think how economics is related. I will say I was very naive to understand the financial education and the economics. But now I think I read a lot of books. I know how things are related, right? Uh, I would say sometime whatever topic, let's see, I will take one practical example, right? Where Priya ji said, right, regarding the owning the house, right? Uh, yeah, I think this concept is, I see 95% time people say you should own the house. You're not owning the house. What are you doing with your life? This is the thing you should do first when you are doing a job or starting a business. You are earning. That is the first thing, right? So when I was reading, I think lot of article and then all right, and I heard a lot of interviews where people, the people who are really successful. There was an investment broker. I forgetting the name. He was really so successful. He can buy the house anytime. But his philosophy, when I heard like right, why he didn't buy the house, he was staying in a Mumbai, and the house he was paying whatever the rent, right? So whatever the rent you pay, right, that's called basically rent yield. Okay, basically how much rent you are paying based on, if he own the house, then he has to, let's see, is 2 3 crore house, 3 crore house, right? And then he has to pay that amount down, right? And then he will basically, that money is blocked for him, right? uh, and he was saying like he's paying just 3 4% rent yield, and he doesn't have to own the asset, right? And what happens, it gives him freedom, right? And the value of the house or something will not increase that much, and whatever the yield he calculated, it will be maximum 5 to 6%. And he earned them, like he knows he can get in the market 12 to 15%. So it's like it's a foolish decision. Why I have to buy a house? I'm earning 12 15% a year buying the house, and then all the calculation I did, I will have 5 to 6% gain. Okay, so buying a house is never a financial decision. Okay, so it's an emotional decision. Definitely, you should own a house when you think you need where you want to settle, but it's not a financial decision. Yeah. So, and yeah, I agree True. with that. Yeah. True. So, yeah. Thank you. So, I just one point I wanted to cover. Go ahead. Anyone else want to ask something? Okay. Looks like everyone is clear. Any closing statement, Priyaji? Closing statement is like मैंने कल ही एक actually I learned one thing like success का definition क्या होता है. So it just give me a minute. Yeah, by Abdul Kalam ji. So first is like S means see your goal. U means understand the obstacle. I'll share this in the group. I'll share with you and you can share. C is create a positive mental picture. First of all, where we are reaching, just visualize that. कि ये करने से क्या होगा? Clear your mind of self doubt, which is like जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता. Self doubt. सब कुछ बेस्ट होगा बट सेल्फ डाउट होगा तो nothing is worth. Embrace the challenge. Challenges will come like family issues. Everybody is not accepting. Everybody is not ready. No problem. It will come, and we have to embrace that. Stay on track. Stay on track, whatever the situation. And last S is show the world you can do it. So first of all, lead by example. First of all, let's do it and then ask others to do it. We cannot ask others what we are not doing, and we cannot give what I don't have. I cannot give anything what I don't have. First of all, start yourself. So I'll share this. This is like a very amazing quote, and I learned so many things from this success definition of success. Like, Yeah, I think a very good point. I think these are the things even I believe. I mean, say I agree with this 100%. What happens, right? If anything I want to achieve, right? If somewhere there's a quote, right? Anything you want to achieve, try to universe will help you. Okay,
first you have to manifest in your mind. Okay, that's called anything realization, anything you want to achieve in your life, you can do through manifestation. Okay, manifestation is a term basically when you imagine, right? See, okay, you want to be let's see, you want to be a think about, you want to be a entrepreneur, right? So and you want to be running a company. So every day when you wake up, right, or every day basically when you should think in, if manifest like in your mind, you think like I'm an entrepreneur, I'm running a company, what will be my day look like? You imagine every day and you behave like that, right? And universe will help you, and that happens, that will happen. I met with so many people, and they basically uh few people like those people, right, definitely they did that, and it's not easy part whatever I'm saying, but I think that you can achieve anything then, I have seen that. Okay, and never come in the negative thought. I think one last thing I would like to say, right, sometime, right, if we think about sometime in subconscious mind works very differently. Okay, conscious mind, but subconscious mind, let's see, in your childhood or in your somebody, your father, or like any relative, or your friends used to say, right, rich people are not good, or if somebody you heard like stock investing is not good, stock investing will make you poor, you will broke, or something, like all negative things you hear, right? And it's in your subconscious mind, it will work like that. Okay, even though you are so good, but if you believe that somehow, then mind will make you do things like that. Okay, you will, if you something you hate, right, if you think rich people are not good, it's in your mind or something, or whatever subconscious, so your decision will be like that. Okay, you will never be you never want to be rich. Okay, you will work things like don't want to be rich. Okay, you work accordingly. If you are thinking stock market will make people broke, and then you believe that so many people told, and you didn't something you accepted, right, you will do things which will make you do that way. Okay, so that believe that nothing should be in subconscious mind, whatever is there, right, so plays very vital role. So just be Yeah, aware about that. Yeah. very Yeah. true. Thank you. Yeah. Okay. So yeah, I think this was a very good start of the Sunday morning, where we learned so many new things. So all the best. I think we can be a final. I think everybody wants to be a financial free, right? Once you are have financial freedom, then you have time freedom also, I believe. So yeah, we all can achieve that. Believe. Yeah. Thank you. Thank you so much.